Namaste, assalamualaikum. My name is Sanjeeda Fatima and you are watching my YouTube channel Fatima's Tutorial. So friends, in Korean consonant there are three types of consonant. First, simple consonant, second, aspirated consonant and third, tensed consonant. तो सिंपल कॉन्सोनेंट एंड एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी 14 कोरियन कॉन्सोनेंट के नाम पर। तो जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस्ड कॉन्सोनेंट, लाइक हाउ टू राइट एंड प्रोनाउंस अ टेंस्ड कॉन्सोनेंट। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए आगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली रिवाइज सिंपल कॉन्सोनेंट। हमारा सिंपल कॉन्सोनेंट का पहला लेटर है खियोक। खियोक It's like G, Ki. Kieuk. Second letter is nien. Nien, N. Third letter is diguet. Diguet. rieul, mieum, pieup, siot, ing, chieut, and last is hieut. Giyeok, nieum, diguet, rieul, mieum, pieup, siot, ing, chieut, hieut। ये तो हो गया हमारा सिंपल कॉन्सोनेंट। हमारा एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट है first is giyeok. This is G sound and this is K sound. Giyeok, kieuk, giyeok, kieuk. Next is T. This is T. Diguet, tieut, diguet, tieut. Next is pieup. This is P sound. Pieup, 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 pieup. Last aspirated consonant is this is J sound and this is Ch sound. This is chieut, this is chieut, chieut, chieut. This is our simple consonant and aspirated consonant. तो हमारा डबल या टेंस्ड कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट इज kieuk, diguet, pieup, siot एंड लास्ट इज chieut। आपको ये साउंड बहुत ही सिमिलर लग रहा होगा सिंपल कॉन्सोनेंट से, बट अगर हम इसे एक एग्जाम्पल लेके देखें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वोवेल आ, तो ये हो जाएगा इट्स गा।
गा, गा। और हम सिंपल कॉन्सोनेंट को देखें तो ये कहलाता है खा। इट्स का एंड सिंपल consonant is kha. Next is da. It's da and da. Da, da. Third is ba. Ba. But simple consonant we pronounce it as bha. Ba and bha. Next is sa. हमारा थर्ड डबल कॉन्सोनेंट एंड सिंपल कॉन्सोनेंट दोनों ही सिमिलर सुनने में आ रहा है, सा। बट इसे हम थोड़ा खींच के कहते हैं सा, एंड इसे हम कहते हैं सा, लाइक हिस्सा। हम हिंदी में पीस को कहते हैं हिस्सा। तो हिस जो साउंड आ रहा है वो कहलाता है हमारा सा। क्लीन, क्लीन को हम हिंदी में कहते हैं साफ। तो साफ का जो सा निकल के आ रहा है वो है सा, सिंपल कॉन्सोनेंट, एंड इट्स हिस्सा, सा और सा। नेक्स्ट इज जा। Ja and simple consonant we pronounce it as jha. Jha. Let's pronounce it one more time. Double consonant is ga, kha, ga, kha, da, 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 ba, pha, ba, pha, sa, 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 sa and sa, ja, jha, ja, jha, like ga, da, ba, sa, ja, kha, da, pha, sa, cha. सो ये हमारा हुआ डबल एंड टेंस कॉन्सोनेंट। आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट। अगर आपको किसी और लैंग्वेज के ऊपर वीडियो चाहिए सो यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। अन्योंग।